So, okay. There's a Microvision software, okay, uh, which is used for programming your controllers. Okay. So how to begin this one? So you always consider your program as a project in this field, or you can say related to your processor or controller, because it's a project what you do normally for each program, because it is related to a specific kind of ARM processor. I'll come to that one. So click on new Microvision project. Okay. If anything window comes over, you just click no. Okay. So then you need to give the file name. So choose the local disk C, give some project file name after creating some new folder. Okay, new folder. So I'm writing for the first time live or demo. That's all right. First, okay. First, open this folder. Give the project file name. Okay. So I'll give the name demo. Okay. Then don't no need to change anything. Okay. Just click on save. Okay. Just click on save. You may get some messages like this. Click just on no. Okay. No. So after this, you get this window. Here we have to choose the device on which we are programming. Okay. So here you can see many companies which offer different varieties of processors or controllers. Okay, like Actel, it is manufacturing some microprocessor or microcontroller like MicroSemi. Okay, some analog devices. Analog devices is a company name. Atmel is a company name. Okay, AT. So like this, you have these many companies. These are the companies. Okay, these are the companies which manufactures different processors or controllers. Okay, you can read them. Some of them you may be knowing it. Okay, something like NXP. NXP means your, if you don't know, you write it in your notebook. NXP means it's a Philips. Okay, the company Philips which manufactures controllers. So it is named by NXP. Next is Sharp. I think most of you know. Then Silicon Lab. They also manufacture this variety of controllers. Silicon Labs. Then Sharp is one more company which manufactures some controllers. Then Sonix is there. Spansion is there. Texas Instrument is there. They also manufacture controllers. So you can program them using Keel software. Then you have Toshiba. Then we have Tried Semiconductor, Winbond, Wiznet, Zilog. ठीक है, ये सारी चीज और सारे कंपनीज हैं जो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प अस इन कोडिंग देम. ओके, कोडिंग देम. इज इट क्लियर? Yes or no? Is it clear? Yes. Okay. Now, as from the first day, I'm seeing LPC 2148 is a LPC 2148 is a ARM7 microcontroller manufactured by Philips. Okay. So you can see, as I told just now, NXP means Philips. You write it in your notebook also. Okay. NXP means Philips. So this NXP, if you expand by clicking this plus, okay, you'll get variety of processors or controllers manufactured by Philips. Okay, these many are there. Okay. Now, which one we are using in our lab? Can you tell me? Which one we are using? Jaldi. Which one we are using? LPC? कोई तो बोलो. 2148. Yes, LPC 2148. You can see it is 13 series, 14 series, 15 series, 17 series, 21 series, LPC 2148.
What is it? 48. Yes, 148. 2148. You have to remember it. We are using in our lab. See here. In NXP, we can find LPC 2148. Okay. So just click on that LPC 2148. You will see its स्पेसिफिकेशन. जैसे आपका मोबाइल का स्पेसिफिकेशन होता है ना, वैसा ही इस प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन है. इट्स ए ARM7 as I told, TDMI S-based high performance 32-bit RISC microcontroller. 32-bit because all the registers are 32-bit and it has on-chip flash RAM of 512 KB, ISP, okay, 10-bit ADC, 14 channels, USB 2.0. ये सारी चीज इसके अंदर फीचर्स हैं. ठीक है. So we have chosen LPC 2148. Vendor means manufacturer is NXP, means Philips, and tool set is ARM. Correct? Is it clear how to select it? Yes or no? Yes or no? Bolo. There is one more way to get the things. Okay. So वो वैसे भी हम कर सकते हैं. हमको ऑलरेडी पता है इट्स LPC 2148. What you need to do? थोड़ा से अगर मैं कोई एक डमी रखता हूँ तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना है LPC 2148. Can see under NXP category we are getting LPC 2148. Just click it, then click on OK. Okay. तो LPC 2148 सेलेक्ट करके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है. Then you get this window. Okay. So Microvision is saying copy startup.s to project folder and add files to project. So this startup.s file is not useful for writing assembly code. Okay. If you are writing the code for or code in the form of what is say embedded C. Embedded C में लिख रहे हो तो startup s को आपको project file में डालना जरूरी है. You write this point. Okay. If you are writing embedded C program, you must include the startup.s into the folder. If you are not including that one, it means you are writing assembly code. So today we will concentrate on assembly code. Right? So click on no here. Click on no. Okay. So then you get either a target folder. Okay. Under target folder you will get source group. Right? Are you able to see everyone? Yes or no? देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then after once the setup is over for controller, now let us create a file. Go to file, click on new. Okay, click on new. Then go to file to save first. Let us go to this one, save as. Okay, save as. So we are writing for first program. Let us say demo 1. Okay, demo 1 dot s. I am typing because it is a assembly code. Okay, you can get the types. Okay, dot s because जैसे आप C प्रोग्रामिंग में dot c सेव करते हो, यहाँ पे demo dot s. Okay, then click on save. Okay, now you can see it is not there in the group, the source group what we created. So we must add this file to source group. So to do this one, click on source group, right click करो. Okay, तो यहाँ पे add existing files to group. Okay, यहाँ पे .c by default दिया है, लेकिन हम .s में लिखे हैं प्रोग्राम और ARM source file में लिख रहे हैं. तो you can see demo.s it is showing. Click on this one, add, then close it. You can see here. Okay. Now in the tree you can find the .s file. Till now any doubt? Can ask me. अभी तक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता चल रहा है ना? Everyone, I am going very slow. ठीक है? I am going very slow. Is it clear everyone? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now let us write the program. Always try to include a tab
सो टैब क्लिक करने से आपका टैब टैब हो जाएगा। ओके, एक टैब मिलेगा आपको, एक स्पेस मिलेगा, तो use this one. So I'm writing in capital area. You can see the color is turning blue. It means थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप कलर्स कैसे टर्न हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ARE लिखा ब्लैक था, AREA लिखा इट बिकम ब्लू। ओके, जूम करके देखिए कलर चेंज हो रहा है। इट मीन्स व्हाट? इट इज ए कीवर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड? The keyword is one thing whose meaning we cannot change. Understanding? Whose meaning we cannot change, or its meaning is already written in the assembler if you are using assembly language. If you are using compilers, it's in compiler itself. So now area I am writing for first. Let me write the name like dem1, demo1, then comma बोल सकते हैं क्या लिखना भी? Somebody tell me what I need to write. What I need to write? बोलिए, anybody? Anyone? इंटरनल में तो सारे लोग लिखे हैं, बोलो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? What I need to type? Shweta, Pallavi, what I need to type? Read only. हाँ, पहले रीड ओनली है, उससे पहले कुछ है? चेक करो कोड। यस, चेक करो। Code, I am writing code. Okay, code. Then now it is read only. Understanding? Read only. So if you are writing the data, you must write data. Here you are writing code, therefore it is a code. Then इसके बाद क्या करना है? Anybody? Enter. Entry, not enter. Entry. Okay. Again, it's a directive. Then start is the label. पता है ना, इतना दिन के बाद भी अभी नहीं आया तो मतलब क्या है? Let me show you demo, all the demos using same program. ठीक है? So first I will show you how move works and how we can see the things in the output. So let us say I'm using instruction move. Okay, let us say R0. You can see the colors are changing. R0, I'm adding some number here. Let us say 0x05 to R0. Okay, you can take it to next line also, no issue. You can tab exactly देना है आपको, ठीक है? Next, let us say I am moving this R0 to R5, ठीक है? Then I'm moving this R5 to, let us say, R8. This is just a demo, okay? Just a demo. Then if you want, you can add some more instructions, okay? Or else you just put NOP operation I am using to indicate ourselves. Means जब हम program लिख रहे हैं, we don't know where is the end. So one NOP executed, then we can say there is a end of the program. So for our purpose, I am putting one NOP in every program. So NOP, then end. Okay. Just save it. Go to file. Click on save. Your program get saved in the your folder, project folder that you created. And next is you have to build it. Okay, build it. So to do that one, here you have okay, यहाँ पे build है.
translate, you can see translate F7, okay, build F7. So you first translate it, you can see 0 errors and 0 warning. Okay, so always try to get 0 errors and 0 warnings for your program. Then some setups we need to do. Go to option. Okay, so right clicking on the options, you get this window. So check this micro lib. Okay, then go to output, create hex file because we need to analyze that hex file. Then click on OK. ठीक है, एक ही प्रोग्राम में आप चेंज कर रहे हैं every time, no need to do. If you are writing every time different project or different file, you need to do for everything. ठीक है, अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, this is one time thing. Then later no need to do all these settings. So click on OK. Click on OK. Now again build it. You can see again 0 error and 0 warning. So no warning errors, no warning errors or even errors. You have to get this one. So, and hex file is also created. Now let us execute that hex file. उसके लिए कुछ commands नहीं है, कुछ नहीं है. Just go to debug, start, stop debug session. Control F5 भी आप use कर सकते हैं. You can just click on this one. Okay. A window will pop up like evaluation mode. Just click on OK. Right. Now ये है आपका कैसे वर्कबेंच और कैसे एवरीथिंग. आपका जो आर्म प्रोसेसर है उसके अंदर क्या क्या है, सारी चीज यहाँ पे है. ठीक है, इस विंडो में. Somebody can put this screenshot in their group so that जो लोग अटेंड नहीं कर रहे उनको पता रहना चाहिए कि what they are missing. Okay, they can write the assembly of code, live assembly of code ऐसा लिख के ये स्क्रीनशॉट डालिए. Put it in your group. Let us see. Do it first. Then जल्दी करो. स्क्रीनशॉट निकाल के नीचे लिखो असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ कोड. Somebody has to do it. फास्ट करें. इतना देर क्यों स्क्रीनशॉट निकालने में? यस, इसमें भी somebody has to do it. जल्दी करो. निम्रा, पल्लवी. Thanks, sir. हाँ, नहीं आ रहा. भेजे सर ग्रुप में. भेजिए. हाँ अब आया. राइट राइट, गुड. नाउ इसके बाद और एक हम स्क्रीनशॉट डालेंगे, लेकिन देखिए वेदर इट इज पॉसिबल ऑन एट द एंड. ये दिस इज द इनिशियल फेज और इनिशियल थिंग्स ऑन अ डिसअसेंबली. ठीक है, एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज होता है सारे दिखते. ठीक है. So first of all, LPC 2148 has 16 registers. 16 registers. R0 to R15. यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में. ओके, रजिस्टर्स के एक टैब है. अगर प्रोजेक्ट को क्लिक करोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स के फाइल दिखेंगे. यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो पूरे रजिस्टर एंड इट्स वैल्यू. ओके, ऑल आर 32 bit represented in the form of hexadecimal. So these are all hexadecimal numbers. You can see 0x 0x 0x, and you can even see CPSR, current program status register. Okay, उसका कंटेंट एंड पीसी का भी एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं 00, एंड SPSR का कंटेंट भी आप देख सकते हैं.
then user system fast interrupt. If you want to go ahead with the more learning in this one, you can go ahead with this one. Already I explained what all these things. Okay, so you can go ahead. So these are all related to LPC 2148. आपको फर्स्ट और सेकंड मॉडल में आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये, ठीक है. Now this is our code. ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, this is our code. I'm highlighting it. I don't know whether it came into highlight हुआ अभी. So this is your code. Okay, कोड आपने लिखा, क्या करता है आपको पता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज थ्योरेटिकल थिंग. लेकिन प्रैक्टिकली ये डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है. नाउ कैन एनीबडी आंसर मी व्हाट इज दिस वन, येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एंड व्हाट इज दिस फर्स्ट नंबर. कैन यू टेल मी. अगर आपको दिख रहा है तो जूम कीजिए. व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस. 0x000000. What is this? Can you tell me? जल्दी कीजिए, we don't have time. 9 minutes है देखो सर. Tell me fast. पता है नहीं है, इतना तो बोलो. You know or no? Don't know. I already told this one. This 0x0000 is a address. Okay. For us, for a human being, everything is English, maybe instruction, maybe characters, maybe numbers. But for a machine, it is always address, and that too in terms of binary. Okay, so 0x0000. You can see in PC, that is R15. You can check R15 also. R15 is having value 0x000000. It means the next instruction to be executed, okay, the address of that is in PC. Okay, so that's why you can see this is the address. Now what is this one, E3A0005. okay, हमने इंस्ट्रक्शन लिखा था move R0, 0x05. ठीक है. for a controller move R0 means E3A. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में रखिए, इट इज ए मशीन कोड ऑफ मूव R0. इट इज ए मशीन कोड ऑफ मूव R0. अंडरस्टैंडिंग in terms of hexadecimal. Now 00005, you can see that data is taken like this. Okay, so rest again it has taken 4 bytes, so therefore it is next address is 4. so 0 to 3 ये acquire करेगा, then 4 से second instruction, ठीक है, then third instruction, then not. okay, is it clear? yes or no? कौन सा कोड है, कौन सा डिसअसेंबली, यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं आप, इट इज रिटन डिसअसेंबली. ओके, इज इट क्लियर? यस सर, नो? Yes, sir. Okay, now let us execute this program. So what I'm getting initially in R0, is 00. You can see if you just roll over the mouse, I'll show you. जस्ट माउस रोल ओवर कर रहा हूँ, आपको R0 का कंटेंट दिखेगा. तो R0 कंटेंट इज 0x000 बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन. यू कैन सी एग्जीक्यूशन हियर. दिस इंडिकेट्स द एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देख रहे हैं. द पॉइंटर व्हाट आई एम मेकिंग, इट इज वेयर द एग्जीक्यूशन इज स्टार्टिंग, मींस फ्रॉम द fourth row it is starting. So first it is need to be executed. To execute this one, okay, you can do full execution or step execution. So you can type the F11 or just click here step. okay, मैंने क्लिक किया तो इनिशियली 0 था R0, अभी 5 हुआ. देखो, कैन यू सी दिस वन, 5. yes, are you able to see कैसा आया 5?
यस, इज इट क्लियर? एग्जीक्यूट होने के बाद R0 में ऊपर देख सकते हैं 5 आया, देन PC हैज चेंज्ड, हियर PC चेंज टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एड्रेस, ओके, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एड्रेस क्या है 00004, दैट एड्रेस इज यू कैन सी इन द PC। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, नो? जल्दी बोलो, टाइम हो गया, 5 मिनट्स है, मुझे और एक प्रोग्राम करना है। निम्रा, पल्लवी, रोहन, Yes. हाँ। तो ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हैं पीसी में, यहाँ पे 5 पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखो दिस इज येलो पॉइंटर ऊपर, मैंने पॉइंटर भी लगाया, मेरे माउस का पॉइंटर भी लगाया, इट मींस इट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, so that is stored in PC. Now it will execute that part. I'll do once again step execution. You can see क्या था ये, R0 को R5 में मूव कर रहा हूँ, क्या हो गया ये R5 to R0 हो गया, ठीक है। चेंज द प्रोग्राम, ठीक, उसके लिए मुझे फिर से प्रोग्राम में करना पड़ेगा ना, थोड़ा उल्टा हुआ है, कोई नहीं बोला मुझे इज 5, it is 0 and it is 8 and it must be 5. Now once again I'm coming here, so from the first again I'll try to do step, तो 5 आ गया R0 में, सेकेंड इंस्ट्रक्शन में देखिए आई एम मूविंग R0 to R5, R0 to R5, okay. In R5 you'll get 5, see, in R5 you're getting 5, then next once again I'm moving R5 content to R8, okay, R5 content to R8, so again R8 will get 8, then you can see at a C or 0x0cc means in this at this point we are executing knob will do nothing, no operation, knob means, okay, so you won't get any change, so here you can stop the things and next पे execute करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, end हो जाएगा बस, end. So it will update all the CPSR, SPSR and it will go to some location where it stops the things, right? So you can put this screenshot after assembly, after execution, you can write this after execution and put this screenshot in your group, so that before execution and after execution क्या हुआ पता चलेगा लोगों को। Then put in a group. After the execution. कोई नहीं कर रहे पुट, जल्दी पुट करो, I will go for next program. We have 10 minutes, I think 10:40 तक है ना, okay. 9:15, okay, 10:40 तक रहे, okay. Go ahead, fast, put in a group. निम्रा, क्यों इतना स्लो कैसे, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, it is not coming, you ask me. Yes, after execution लिखो नीचे कमेंट, जल्दी, इतना देर कैसे लगा रहा है।
एक भी एक्टिव नहीं इतने स्टूडेंट्स में, हाँ वाई? आफ्टर एग्जीक्यूशन लिख के स्क्रीनशॉट कर दो। हाँ राइट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन नीचे लिखो कमेंट। Okay, now let us go to the one more program where I'll use addition, subtraction, something kind of that. So you can even see those codes. So let me stop this one first. Stop this one. I change the code here itself. I'm not writing one more program. So here what I'll do, add. You can see it is kind of getting converted into blue color. Add R0 with let us say 0x 04. You must get in R5 9. Okay, then I will use that barrel shifter operation. I hope you remember that. Okay, R8 LSL hash, क्या आंसर आना चाहिए मुझे बोलिए कोई। R8 में क्या आंसर आना चाहिए? somebody has to tell me. LSL 01. okay, 01. Next, somebody has to tell me what should be the answer in R8. कोई बोलना चाहिए मुझे, because it is the operation of barrel shifter. Then let us use subtractor. So R9 let us say R8 comma R0. somebody has to tell me result in R9 also. ठीक है, आंसर बोलिए मुझे क्या आना चाहिए आंसर। वर्क ऑन दिस, आंसर क्या आना चाहिए बोलिए मुझे। व्हाट शुड बी द आंसर इन R5? R5 में क्या आंसर आना चाहिए? पल्लवी, श्वेता, फिर इनको बुलाना पड़ता। टेल मी द आंसर, क्या आंसर आना चाहिए R5 में? वैष्णवी, वैशाली, कोई नहीं है। हाँ? शिवानी, नेहा, सैयद जीशान, सना। व्हाट शुड बी द आंसर इन R5? R5 में क्या आंसर आना चाहिए? R5 पूजा, बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे? हाँ, nobody wants to tell me. एडिशन भी नहीं कर सकते? कितने बड़े हो गए, एडिशन भी नहीं कर सकते? हाँ, जस्ट एडिशन। 5+4 एडिशन भी नहीं कर पा रहे आप तो, प्रॉब्लम क्या चल रहा है? यस निम्रा, यू वांट टू टॉक समथिंग? क्यों 5+4 9 भी नहीं बोल सकते आप? पूजा, नेहा, सुष्मिता, नेक्स्ट वाला बोलो। LSL मीन्स लेफ्ट शिफ्ट R5 by 1 bit, क्या होगा? हाँ, कमेंट्स लिखेंगे। R5 में क्या आएगा? 0x09 आना चाहिए रिजल्ट। Can you tell me what should be the answer in R8? कोई एक्टिव नहीं है। हाँ,
वर्षिता वैष्णवी कोई एक्टिव नहीं है, ऐसे कैसे? हाँ मैंने समझे। You don't want to pass or what? You don't want to do engineering at all? प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ कोई नहीं बोलना चाहता आंसर है। यस चेक तो करो। 0x यस क्या आएगा? वन टू ओके check it in decimal. It is actually 18 in decimal. It is 18। 9 into 2 मैंने बोला था लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, राइट शिफ्ट करोगे तो डिवाइड बाय 2 होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करोगे तो 9 into 2 is 18। so in hex it is 12। okay so in hex it is 12। now if you subtract 5 from this one, 13 in that one means in R9 you must get, what you must get? 18 minus 13, 18 minus 5 is 13, 13 in hex is, वो भी नहीं पता। 0x 0d। बात ही नहीं करना चाहते आप लोग, मुश्किल ऐसे होता है। एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो चलो ये प्रोग्राम का देखेंगे, इसमें तो एक्टिव है नहीं स्क्रीनशॉट निकालने में। हाँ सिर्फ कोड का चलो, सिर्फ कोड डाले नहीं, मुझे डालना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी डालने में इतना देर है, सिर्फ कोड का डालो बस, सिर्फ कोड का डालो। Next, I think 2 minutes is there. I'll execute this one now. Okay. So again you can see I got the code with the 0 errors and everything. So let me execute stepwise. Stepwise I'm executing. So first value is you can see 5 in R0 you get 5। ठीक है R0 में 5 आ गया, आप देख सकते हैं मैंने माउस पॉइंटर भी रखा वहाँ पे, R0 पे 5 आ गया। Then from the second step I must get 9 in the R5। okay R5 क्या हुआ 5 हो सकता R5 5। execution 5, R is 4, R5 is 9।
ठीक है, alpha is 9, we got, then I think LHL होगा, 12, okay, it is executing, you can see 12 आ गया यहाँ पे, R8 में आ गया अभी, no issue. Then in R9 I must get 0 execute. Here T आ गया. So this completes your execution. इसका एक स्क्रीनशॉट डालो, खत्म. After assembling. Anybody can ask me? We have, I think we reached the time. Okay, next staff may be waiting. So stop here. Any doubt you can put a message to me or call me. I'll clear the doubt.